Hello students, today we are going to discuss differentiation of parametric equations. Question number 1. If x equal to a cos theta plus theta sin theta, y equal to a sin theta minus theta cos theta, then find dy by dx. So first write x equal to a cos theta plus theta sin theta. अब now differentiating with respect to theta. So differentiation of x with respect to theta, dx upon d theta equal to a constant common. Differentiation of cos theta with respect to differentiation of cos theta with respect to theta minus sin theta plus, अब there are two function in product, theta into sin theta, so use product rule. First function theta as it is and differentiation of second function sin theta means cos theta plus sin theta as it is and differentiation of first function theta is 1. Next step, sin theta and sin theta cancel. So we get a into theta into cos theta. Now write y equal to, since y is equal to a sin theta minus theta into cos theta. Therefore dy upon d theta equal to a constant common. Differentiation of sin theta with respect to theta cos theta minus, अब use product rule, theta first function as it is and differentiation of cos theta minus sin theta plus cos theta as it is and differentiation of theta 1, curly bracket close, big bracket close, is equal to, open the bracket, cos theta plus theta sin theta minus cos theta. So cos theta and cos theta cancel. So we get a theta sin theta. Therefore dy upon dx equal to dy upon d theta upon dx upon d theta. अब dy upon d theta is a theta sin theta, a theta sin theta upon dx upon d theta, a theta cos theta. अब now cancel, a और a cancel, theta और theta cancel, so now we get sin theta upon cos theta equal to tan theta. So dy upon dx equal to tan theta. Next problem, if x equal to sin cube t upon root cos 2t and y equal to cos cube t upon root cos 2t, then prove that dy upon dx equal to minus cot 3t. So again start from x equal to, since x equal to
साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस टू टी. रूट कोस टू टी मीन्स कोस टू टी रेज टू द पावर 1/2. और ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में लिखें तो क्या मिलेगा आपको? कोस टू टी रेज टू द पावर -1/2. पहले डिवाइड रूल में डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, अब मैंने उसको ऊपर लिख दिया तो किससे करेंगे? प्रोडक्ट रूल से, लेकिन तब भी डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ होगा. सो बेटर चॉइस इज टेकिंग log on both side. Taking log on both side. Okay, in left hand side log x equal to is equal to, अब राइट हैंड साइड में log लो, log in bracket sin cube t into cos 2t raised to the power -1/2. Next step, using property of log, log m into, this is m or this is n, log m into n equal to log m plus log n. So next we can write log sin raised to the power 3t plus log cos 2t raised to the power -1/2. Next step, 3 log sin t -1/2 log cos 2t. Okay, अब now differentiate. Differentiating with respect to x. So differentiating with respect to t. So differentiation of log x with respect to t. फर्स्ट log का करेंगे तो क्या आएगा? 1/x और इंटू x का विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3. अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन? log का पहले, तो log का होगा 1/sin t और फिर किसका करेंगे अपन? sin t का, तो sin t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos t. देन -1/2. अब log का करेंगे तो क्या आएगा? 1/cos 2t एंड देन cos 2t का करेंगे तो क्या आएगा? -sin 2t और इंटू 2t का 2. अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है? दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल. नेक्स्ट स्टेप, dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू x इंटू 3 टाइम्स cos t अपॉन sin t मीन्स cot t माइनस माइनस प्लस एंड sin 2t अपॉन cos 2t tan 2t. अब नाउ y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन cos 2t. y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t. Okay, more simplify, cos cube t
into cos 2t raised to the power minus 1 by 2. Taking log on both sides, so log y base e is equal to, this time write directly same as previous part. So 3 आगे आ जाएगा 3 log cos t base e minus 1 by 2 log cos 2t. अब now differentiate with respect to t. Differentiating with respect to t. Differentiation of log y 1 upon y and differentiation of y with respect to t dy upon dt is equal to 3. Differentiation of log cos t 1 upon sin t, sorry, differentiation of log cos t 1 upon cos t and differentiation of cos t minus sin t minus 1 by 2 differentiation of log cos 2t 1 upon cos 2t into differentiation of cos 2t minus sin 2t into 2. अब now cancel, 2 and 2 cancel. So next step we get dy upon dt is equal to y into big bracket minus 3 tan t minus minus plus and sin 2t upon cos 2t tan 2t. Therefore dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt is equal to dy upon dt means y minus 3 tan t plus tan 2t upon x 3 cot t plus tan 2t. Value of dx upon dt. Last term 3 cot t plus tan 2t. 3 cot t plus tan 2t. Next step y upon x. Y is cos cube t upon root cos 2t or x equal to sin cube t upon root cos 2t. So root cos 2t cancel. So we get cos cube t upon sin cube t means cot cube t. Cot cube t in bracket minus 3 tan t plus tan 2t upon 3 cot t plus tan 2t. अब हमको लाना क्या है माइनस कोट 3t
यानी पूरे क्वेश्चन को किसमें चेंज करना अपन को, कोट में। तो पहले हमको फार्मूले सारे 10 के याद होते हैं, सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 10 एंड एट लास्ट कन्वर्ट इनटू कोट। सो कोट क्यूब टी, नेक्स्ट टाइम में क्या लिख देंगे इसको अपन, 1/10 क्यूब टी इज इक्वल टू 1/10 क्यूब टी in bracket in numerator 310t, so write 310t as it is, minus 310t plus 10 2t. Formula of 10 2t is 210t, sorry, 310t 210t upon 1 minus 10 square t upon 3 cot t. So write 3/10t plus 210t upon 1 minus 10 square t. हम now simplify taking LCM, 1/10 cube t in numerator LCM is 1 minus 10 square t और in denominator LCM is 10t into 1 minus 10 square t. So 1 minus 10 square t cancel, only 10t लेफ्ट बचेगा, नीचे बचेगा, उसको हम क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे, so into 10t. अब now simplify, minus 310t और 1, so minus 310t minus minus plus 310 cube t plus 210t प्लस 210t और इंटू 10t, स्पेस नहीं था इसलिए। अब नाउ इन डिनोमिनेटर 3 इंटू दिस, सो 3 minus 310 square t प्लस 210 square t. अब नाउ कैंसिल 10t and this cube is cancelled, so we get only square. Next step, 1/10 square t into minus 310t or 210t, so minus 10t plus 310 here 10 cube, so plus 310 cube t upon 3 minus 310 square t plus 210 square t, so minus 10 square t. Next step, 1/10t 10 square t and minus 10t common in numerator, so we get 1 minus 310 square t upon 3 minus 10 square t, 10t and square cancel, so we get
minus sign, common as it is outside. In numerator 1 minus 3 tan square t upon 3 into tan t, so 3 tan t minus 10 क्यूब टी. अब यदि आपको टेन थ्री थीटा का फार्मूला मालूम हो, क्या होता है टेन थ्री थीटा का फार्मूला? टेन थ्री थीटा, क्या विल राइट टेन थ्री टी इन टर्म्स ऑफ टेन थ्री टी का फार्मूला होता है 3 टेन टी माइनस 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर टी. अब इससे आप कंपेयर करो तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है? 1 अपॉन टेन थ्री टी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, सो इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन थ्री टी, और वी कैन राइट माइनस कोट थ्री टी. This is very lengthy questions. Question number 3. If x equal to a sin 2t and 1 into 1 plus cos 2t and y equal to b cos 2t and 1 minus cos 2t, show that at t equal to pi by 4 dy upon dx equal to b upon a. So first write x equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t. Therefore dx upon dt is equal to a constant, apply product rule, sin 2t as it is, and differentiation of second function means 1 plus cos 2t. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन 1 का 0 और cos 2t का क्या होगा? माइनस साइन 2t, और इनटू में क्या आएगा? 2t का 2. अब नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 प्लस cos 2t as it is, and differentiation of sin 2t, cos 2t into differentiation of 2t 2. now use bracket. a कॉमन लिखा था अपन ने, तो sin 2t as it is, differentiation of 1 plus cos 2t minus sin 2t into 2 plus 1 plus cos 2t as it is, and differentiation of sin 2t cos 2t into 2. Next step, simplify. a as it is minus 2 sin square 2t plus 2 cos 2t, open the bracket also, and cos 2t into 2 cos 2t, 2 cos square 2t. More simplify for easier calculation. 2 common, so we get cos square 2t minus sin square 2t plus 2 cos 2t is equal to a. अब दिस इज आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो cos 4t plus 2 cos 2t. अब नाउ सेकेंड पार्ट, since y is equal to
b cos 2t into 1 minus cos 2t. अब now differentiate dy upon dt is equal to b constant cos 2t as it is and differentiation of 1 minus cos 2t, 1 का 0 और माइनस cos 2t का होगा प्लस sin 2t इंटू 2 प्लस 1 माइनस cos 2t as it is and differentiation of cos 2t minus sin 2t into 2 bracket close. Next step, simplify 2 sin 2t cos 2t means sin 4t, 2 sin theta cos theta, sin 2 theta तो डबल हो जाता है एंगल यानी sin 4t. अब now open the bracket, minus 2 sin 2 into 1, so minus 2 sin 2t and then 2 sin 2t cos 2t equal to sin 4 2t, so plus sin 4t. Next step, is equal to b in bracket 2 times sin 4t minus 2 sin 2t minus 2 sin 2t. This is the value of dy upon dt. Therefore dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt. अब dy upon dt means b in bracket 2 sin 4t minus 2 sin 2t upon a 2 cos 4t plus 2 cos 2t, 2 cos 4t plus 2 cos 2t. Therefore dy upon dx at t equal to पाई बाय 4 में निकालना अपन को, t equal to pi by 4 is equal to b in bracket 2 sin, अब 4 into pi by 4 यानी क्या मिलेगा आपको पाई माइनस 2 sin 2 into pi by 4 means pi by 2 in denominator a into 2 cos 4 into pi by 4 means pi plus 2 cos pi by 2. Now put the values. Sin pi means 0, so first term is 0 and sin 90 is 1, so second term is minus 2 upon a cos pi minus 1, so we get minus 2 and cos 90 0, so plus 0, so minus 2 or minus 2 cancel, so we get b upon a, so hence proved. Next problem, if x equal to e to the power t, since x equal to e to the power t plus e to the power minus t upon 2, therefore dx upon dt is equal to
differentiation of e to the power t plus differentiation of e to the power minus t, e to the power minus t, और फिर चेन रूल से माइनस टी का क्या होगा -1 अपॉन 2. नाउ सिंप्लीफाई. सो e to the power t minus e to the power minus t upon 2, and this quantity equal to किसके इक्वल दिखा रही है, y के. so this is equal to y, and y equal to e to the power t minus e to the power minus t upon 2. Therefore dy upon dt is equal to differentiation of e to the power t is e to the power t minus differentiation of e to the power minus t e to the power minus t, and then differentiation of e to the power minus t कितना होगा -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस अपॉन 2, and this quantity equal to x. Therefore dy upon dx, अब dy upon dx किसके इक्वल होगा, dy upon dt upon dx upon dt. So dy upon dt means x and dx upon dt is y. So we get dy upon dx equal to x upon y. Hence proved. Next problem. If x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta. अब now differentiate. Yeah, first right. Since x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta. अब now differentiate with respect to theta. dx upon d theta is equal to 2 constant. Differentiation of cos theta minus sin theta minus differentiation of cos 2 theta माइनस साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 2 थीटा कितना हो गया 2, टेकिंग कॉमन 2, सो वी गेट माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा. सो रीअरेंज आल्सो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. अब नाउ राइट y, and y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta. Therefore dy upon d theta is equal to 2 cos theta minus differentiation of sin 2 theta cos 2 theta into 2. What is common between these two terms? 2 is common. So we get cos theta minus cos 2 theta. So therefore dy upon dx is equal to 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, I think 4 questions. This is 5th question. So dy upon dx means dy upon d theta means 2 cos theta minus cos 2 theta upon dx upon d theta means 2 sin 2 theta minus sin theta. 2 और 2 कैंसिल, लेकिन आंसर में क्या है 3 थीटा बाई 2 है. मीन्स अप्लाई cos c minus d. Which formula? Cos c minus cos d and sin c minus sin d. CD formula. So next steps. In numerator cos c minus cos d. This last one is special formula. So minus 2 sin c plus d theta plus 2 theta upon 2 into sin
d minus c means 2 theta minus theta upon 2 upon sin c minus sin d. So 2 cos c plus d means 2 theta plus theta upon 2 into sin 2 theta minus theta upon 2. Now tell me your observation. 2 or 2 cancel. So cancel 2 and 2. And sin 2 theta minus theta by 2, or in denominator also same terms. So cancel. Up now sin theta plus 2 theta by 2 means sin 3 theta by 2 is equal to sin 3 theta by 2 upon cos 3 theta by 2, and which is equal to tan 3 theta by 2. Hence proved. In next lecture, we will discuss differentiation of any function with respect to another function. Thank you. Have a nice day.